Welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about the applications of Kc. So we have two applications of Kc: the extent of reaction, and to predict the extent of reaction, the extension of a reaction, and to predict the direction of the reaction. So first we will see what are the applications of Kc and why they are beneficial. So applications of Kc are very important for finding the value of Kc, to find the direction of a reaction and to find the extension of the reaction. So on this base, these two applications are of the application of Kc. The first application we have extent of extent extent of reaction and direction of reaction. So we have two applications of Kc. The one is to predict the extent of reaction, and second we have to predict the direction of reaction. So in this video we are only discussing about the only one application, which is the first application, which is extent of reaction. So the first application we have extent of extent of reaction. So what is extent of reaction? So this application gives us, or by this application we can predict the reaction, how far the reaction will proceed before the equilibrium reaches. So this application predicts that how far the reaction proceeds before reaching equilibrium before reaching the equilibrium state. So this application shows that, or this application predicts that how far the reaction will proceed before reaching the equilibrium state. इसका मतलब है कब तक और कहाँ तक reaction extend होगा. Extent of reaction means how far the reaction will extend. What is the capability of reactant, the product. इस application की मदद से we can know about the capability of the reactant and product, how far they can go under reaction. So in this extent of reaction we have three possibilities. Okay, the one we have that very large value of Kc. So very large value of Kc. So in this possibility, that we know that Kc is greater than 1, or greater than 2. So this shows that this is a very large value, not very, but is large value of Kc. So in this reaction is mostly completed when we have a very large value of Kc. So this shows that the reaction is mostly completed
और नियर टू कंप्लीशन, और नियर टू कंप्लीशन मतलब एक रिएक्शन हो रहा है जिस अगर उसकी वैल्यू अगर हम कोई रिएक्शन की निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ के सी, उस रिएक्शन की के सी की वैल्यू निकालते हैं, इफ के सी इज वैल्यू ऑफ के सी इज लार्ज, सो इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस पॉसिबिलिटी द रिएक्शन इज मोस्टली कंप्लीटेड और रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन, वो कंप्लीट होने वाला है और मोस्टली कंप्लीटेड हुआ हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द रिएक्शन इज मोस्टली कंप्लीटेड, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है अगर वो कंप्लीट होने वाला है तो इन दिस वी नो दैट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी, सो इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई इक्विलिब्रियम अगर हमें मिलता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर या स्टेट, इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट concentration will be more. क्यों? Because the reaction is mostly completed. So अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है तो उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ओके, नाउ suppose a reaction which is H plus Br और ये फिर okay, so consider this reaction reversible reaction. In product we got HBr. Okay, in product we got HBr. So this is a reversible reaction, H plus Br, and in the product we got HBr. And in this reaction value of Kc is the value of Kc is 6.35 into 10 raised power 55. So according to this this reaction have the concentration, the value of Kc is 6.35 into 10 raised power 55. So अगर हमारे पास इस Kc की वैल्यू इज वेरी हाई, इसमें हमारी Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत हाई है, तो अगर हम इस Kc में से अगर हम उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम निकालना चाहिए, अगर हमें प्रोडक्ट HBr की कंसंट्रेशन निकालनी चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc. इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.35 इंटू 10 पावर 55. अगर हम Kc से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालें, सपोज हमारे पास Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, and now Kc is equal to the concentration of reactant. If we assume concentration of product, if we see प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है अपॉन रिएक्टेंट, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, तो 1 इंटू 1, ओके, सो 1 इंटू 1 और Kc की हमारे पास वैल्यू क्या है, 6.35 इंटू 10 पावर 55.
5। सो Kc की जगह हम Kc की वैल्यू लिखेंगे कि 6 अगर हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाए तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट Kc मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट P is equal to value of Kc is 6.35 into 10 raised power 55 into 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी प्रोडक्ट की 6.35 into 10 raised power 55। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई क्योंकि द रिएक्शन इज मोस्टली कंप्लीटेड। हमने क्या पढ़ा, द रिएक्शन इज मोस्टली कंप्लीटेड। तो here I have written this thing that in equilibrium mixture the product concentration will be more। तो here we have proved that इसमें product की concentration ज़्यादा है reactant से। so the value of Kc shows that the concentration of, according to this reaction, the concentration of HBr is large as compared to the concentration that of reactant। HBr की concentration ज़्यादा है concentration of reactant से। तो इस हिसाब से द प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा हुआ। एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर वी विल हैव मेनली प्रोडक्ट एंड द लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट क्या करती है, इस इंडिकेट दैट रिएक्शन गोज वर्चुअली टू कंप्लीशन। मतलब रिएक्शन मोस्टली कंप्लीट हो गया है। बिकॉज कैसे हमें पता चला कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी वी हैव इज a small value of Kc। सो पहले हम इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc में क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ Kc होगी वो स्मॉल होगी और रिएक्शन मोस्टली इनकम्प्लीट होगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन इज मोस्टली इनकम्प्लीट। हमें कैसे पता चल रहा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल। Kc की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ Kc कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से ज़्यादा होती है तो हमें हमेशा आंसर छोटा आता है। सपोज 3/5 तो हमारे पास आंसर कम होगा। अगर 5/3 है तो आंसर ज़्यादा होगा। जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में बड़ा होगा न्यूमिनेटर से तो आंसर हमारे पास उतना छोटा आता है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc शोज दैट रिएक्शन इज मोस्टली इनकम्प्लीट। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन इज मोस्टली इनकम्प्लीट। concentration of reactants is high. Suppose the reaction we have N2 plus O2. This is reversible reaction. I'm making the single arrow with 2 marks. So this is a reversible reaction and the product we got is NO2, 2NO2. So this is the reaction N2 plus O2, nitrogen plus oxygen, and the product we got 2NO2, 2 nitro oxide. Okay, and according to this reaction the value of Kc is 1.0 or 1, we can say 1 into 10 raised power minus 31. So according to this reaction the value of Kc which we have is Kc 1 into 10 raised power minus 31 10 raised power minus 31.
So here if we find out the value of reactant, so the product divided by reactant, or sorry, so in this if we find the value of reactant product, हमने ऊपर वाले में भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड की थी, तो अगर इसमें उसमें हमारी ज़्यादा आई थी, हमारा आंसर आया था 6.35 into 10^55, and in this if we find out the value of the product concentration, so Kc into reactant is equal to product. So suppose reactant concentration is 1 mole. हमारे पास concentration reactants की क्या है, 1 mole है. तो Kc, the value of Kc we have 1 into 10^-31 multiplied by 1 is equal to product. So P is equal to here we have the, in the product we have 2NO2, so here we have 2P. Okay, 2P, so P is equal to 1 into 10^-31 divided by 2. So the answer which we'll get is here 2 will be not coming, where we have a concentration of product in 2. So in formula अगर हमारे पास होता है 2, अगर हमारे पास कोफिशिएंट होता है तो हम फॉर्मूले में उसको पावर की जगह लिखते हैं, तो हमारे पास इधर p स्क्वायर है, p स्क्वायर. सो इधर क्या बन जाएगा, रेडिकल, हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 1 into 10^-31. तो p अगर हमने रेडिकल सॉल्व किया, p इज इक्वल टू 1 into 10^-15, 10^-15. Okay, -15. So here the concentration of product we got 1 into 10^-15. तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, -15. So 1 into 10^-15. So this is very small value of reactant, and there is the Kc of value of Kc हमारे पास है 1 into 10^-31. This is also very small. So this was it mean that हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रही है प्रोडक्ट की बहुत कम है. It means the reaction is mostly incomplete, or we can say the reaction according to value of product की हमारे पास वैल्यू ये आई है. So according to the product, according to the value value of Kc and product concentration, the reaction is just started. The value of Kc is just started. So the second possibility मेरे पास वो थी जो value of Kc is very small, जो Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही थी. क्यों? बिकॉज द रिएक्शन इज, इस Kc की वैल्यू कम क्यों आ रही थी? बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट इज स्टार्टेड बट इज वी कैन से इज जस्ट स्टार्टेड और इज मोस्टली इनकम्प्लीट. वो मोस्टली इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं हुआ. जैसे अगर वैल्यू ऑफ Kc की ज़्यादा आ रही है तो दिस शोज दैट रिएक्शन मोस्टली
completed है, almost completed, and if value of Kc is small, so this shows that, this indicates that the Kc, the reaction is not completed, is not even, is just started, we can say the reaction is just started. And the third possibility that we have, that Kc is equal to 1. So Kc is equal to 1, or this is also called the intermediate value of Kc. Okay, so if in the third possibility, if case value of Kc is equal to 1, this means the reaction will neither go forward neither go the reverse, ना forward reaction होगा ना backward reaction होगा. If the value of Kc is equal to 1, it means the constant, the equilibrium state has been achieved. Equilibrium state is achieved. So this was all about today. The next application we'll discuss in another video.